तो लास्ट क्लास में हमें मेगास्थेनिस पर छाड़ देथिले राइट तापर Yes. हमें मेगास्थेनिस छाड़ देथिले राइट Yes, sir. मेगास्थेनिस हम एनालिसिस कर देथिले हमें Yes, sir. कंक्लूजन Conclusion करथिलो. हाँ लास्ट क्लास कंक्लूजन लिखी कंक्लूजन डिस्कस कर देथिले राइट मेगास्थेनिस रो Yes, sir. ओके ओके जस्ट लास्ट क्लास कौन डिस्कस करथिले मेगास्थेनिस रो कौन कंक्लूजन डिस्कस करथिले सो बेसिकली जस्ट टू गिव अ ब्रीफ सो सी किछि किछि ताको डिस्क्रिप्शन देथिले राइट अबाउट सोसाइटी हला अबाउट इकोनॉमी हे गला सो सेदरा किछि किछि एग्जाजरेशन किछि किछि अलगा सोर्सेस हम देखले कॉन्ट्रडिक्ट करथुला राइट हमें से कंपैरिजन भी करथिले राइट सी कहिथिले फैमाइन्स नै अलगा सोर्स ले फैमाइन अछि राइट सी कहिचंदी कि तमरो स्लेवरी नथिला अलगा सोर्स कोछि स्लेवरी थिला तो देयर वर लाइक फ्यू कॉन्ट्रडिक्शंस तो ताकू बहुत सारा हिस्टोरियंस स्ट्राबो एंड अदर कंटेम्पररी हिस्टोरियन सेही टाइम हिस्टोरियंस जो थिले ताकू लायर कहउथिले राइट बट देन हमें क्रिटिकली एनालाइज करथिले एक्चुअली प्रॉब्लम कोन रहिथिला कैन यू टेल मी फ्यू पॉइंट्स कोन एक्चुअली प्रॉब्लम थिला वाज ही रियली ए लायर और देयर वाज सम प्रॉब्लम आउ किछ अलगा प्रॉब्लम थिला टेल मी फ्यू पॉइंट्स No, sir. तांका So, sir, language language. problem थिला. ओके गोटे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थिला कम्युनिकेशन इश्यू थिला कि मे बी से लोकल लैंग्वेज जान नथिले से की कोन कहिले से अलगा इंटरप्रेट करथिले राइट फॉर एग्जांपल से कहितले सातटा कास्ट अछि किंतु से सातटा ऑक्युपेशन थिला तो से बढिया कि से कोन इंटरप्रेट करथिबे तो वन रीजन हला तमरो कम्युनिकेशन गोटे इश्यू थिला आ कोन इश्यू थिला ओरिजिनल रू कोटेशंस है कि तापर ट्रांसलेशन हला परे तो सेटा मिस्टेक कोनोसी भी लेवल रे हे थाई पारे तो सेटा आ कोन गोटे इश्यू थिला ओरिजिनल सोर्स टा मिसिंग थिला हम ओरिजिनल में ट्रांसलेटेड वर्जन टा को हमें देखुचे डिफरेंट हिस्टोरियन करा किंतु ओरिजिनल टा हमें एपन तो जानि नै देखो दुईटा लेवल एटा मैं डायरेक्टली ओरिजिनल नंबर नहीं व्हाट वी हैव इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन तांकर जो सॉरी कलेक्शन ऑफ कोट्स ताको जो सही टाइम पर ताका पर जो हिस्टोरियन सब थिले स्ट्राबो हे गले प्लिनी हे गले राइट तो ए माने सब तमरा ड्यूडेरस हे गले ए माने सब तारा कोट दै जंती से कोट टाको पुनी ट्रांसलेशन करा हिच इंग्लिश को ताको हम यूज करछु तो दीटा लेवल राइट हेई पारे व्हाटएवर दे हैव कोटेड इज एरोनियस सेकंड हेई पारे जो ट्रांसलेशन करचंती दैट ट्रांसलेशन इज एरोनियस right so there is one more problem like we don't have the original तो ये जो different levels filtration नहीं आସୁଛି तो इधर किसी हमारा loss है पर I was telling you about Chinese whisper से मैं कहूँगी right तो से वाला किसी भूल ही परे अच्छा आओ कौन reason ही परे सर स्लेवरी रो पिक्चर टा तांको माइंड रे तांको कंट्री रे मे भी किछि अलगा थिबो आमो कंट्री को से एते माने स्लेवरी बोली भाबु नथियो सेटा को तो से तांको सोसाइटी से कंपेयर करछुंती probably ସେଇଠାର ଏଇଠାର conditions ଅଲଗା right तो से ता ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର सोसाइटी से कंपैरिजन କରି ସେ इंटरप्रेट କରୁଛନ୍ତି ଏଟା problematic right तो दिस इज द माने मेजर प्रॉब्लम एटा हां आउट जिंस एटा भी थिला जोटा से माने भी अलगा हिस्टोरियंस भी कहउथिले प्रॉब्लम तो थिला बिकॉज़ प्रोबब्ली ही वाज एक्सेप्टिंग व्हाटएवर जीजा कहउछन ताको से लिखि दोथिले राइट क्रिटिकल एनालिसिस आउट के क्रॉस चेकिंग एटा कर परछन राइट तो एंड रे हमें से कहउथिले कि हमें ताको वर्क को स्टिल वी कैन यूज मेगासिनिस वर्क द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कोलैबोरेट दैट विद अदर सोर्सेस राइट ओके तो हम नेक्स्ट आज देखिबा चाइनीज अकाउंट्स फॉरेन अकाउंट से कौन कौन हम डिस्कस करे कहिथिले
Sir, Indo-Greek, Chinese और Arab. Okay, great. So Greek, Chinese, and Arab. Good wala. Roman. Where is it? Oh, sorry. Okay, so आज हम Chinese account discuss करिबा. Okay, so Chinese account re first we'll discuss about Fahin. Then we'll discuss about your Huensang. Then Itsing, right? So ये तीनटा हम discuss करिबा. Important है Fahin और Huensang, right? So travelers रा हमारा तीनटा travelers important, right? So you can expect UPSC plural question আসছে and you can expect Megasthenes, Fahin और Huensang, right? तीनटा important. बाकी Itsing हेगला and Arab travelers हेगला. Ancient perspective रे एते important नहीं, right? Arab travelers टा हमें mostly पढ़िबा medieval रे, early medieval पढ़िबा. सेतले हमें we'll discuss about Al-Biruni, right? सेटा तले important. For now, like we'll concentrate on Fahin and Huensang. Okay, so Fahin. Fahin का time रे आस्तिले इंडिया को? का time रे आस्तिले? Chandragupta II. का time रे आस्तिले Fahin? Chandragupta II. Okay, काहे आस्तिले? Why did he come? Sir, जेहेतु से जने बुद्धिस्ट से रिफर्स करवा पे आस्ते. बुद्धिस्ट कौन होगा आस्तिले? Sir, To study on Buddhism. Okay, study of Buddhism, right? Very good. So, like this, as we know, India is the land of the origin of Buddhism, right? So, बहुत सारे like Fahin हेगले, Huensang हेगले, all of them they came to visit India for single purpose, religious purpose, right? ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ original Buddhist works collect କରିବା ପାଇଁ, right? ଆଉ जो Buddhist teachers India ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ the doctrines of Buddhism ସେଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ. ଦିଟା reason. Okay, so Fahin, he was a Chinese traveler. So he visited India during the rule of Chandragupta II. Okay. ଆଉ ତାଙ୍କର purpose କଣ ଥିଲା? Yes, ଦିଟା ମୁଁ କହିଲି purpose. Both Huensang and ତାଙ୍କର ଦିଟା purpose ଥିଲା. Okay. The first purpose was
original Buddhist work ତାଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା। So original Buddhist work or text ଯାହା ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ study the doctrines of Buddhism। Right? And China रे जो काम वाला थिला ना, जब whatever book was there, it was all translated, right? It was translated from तमरो इंडिया रे पाली वगैरह translated थिला Chinese रे, right? से translated work रे एते विश्वास करोसले, there were like some errors and all, तो सेति पे मानसो आसुथिले to collect the original original text नहीं कि जिबे, and then ताको so that they get authentic source, right? जो बुद्धिज्म रो जहां भी टीचिंग्स अछि सेमिति टू लर्न द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, राइट? एମାନେ बुद्धिस्ट मॉन्क थिले, तो इंडिया रे जो माने सब थिले दोज बुद्धिस्ट मॉन्क्स थिले, ताकोटु एମାନେ ओरिजिनल लाइक टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म तमरो दिस फोर नोबल ट्रुथ्स हेगला, तमरो एट फोल्ड पाथ हेगला, 10 टीचिंग्स हेगला, ता सिग्निफिकेंस दैट ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म सिखिया पे माने इंडिया को आसी थिले, राइट? दिस वाज द पर्पस। ओके, नाउ व्हाट डिड ही do? तो आसिले asking like he was a old man, this guy, he was a 60-year-old man, right? He's asked India like he was quite old. He traveled not very extensively in India, but he traveled, right? He तो ये काफी travel करथिले, and see पूरे society विषय रे, तमरो religion विषय रे, economy विषय रे काफी किछि कहिथिले, right? So let's see से कोन कोन कहिथिले। The first thing is about society. Society first कौन कहिथिले? Peaceful society, right? ये काफी पीस कहिथिबे, right? हम देखिए नेक्स्ट जे ट्रैवलर थिबे से टिके कॉन्ट्राडिक्ट करबे हमको, राइट? ये कहि पीसफुल सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर भलो थिला, पीसफुल सोसाइटी, राइट? एंड सब कहिथिले अधिकांश लोक रेस्पेक्टेड पीपल, दे आर वेजिटेरियंस। जो नॉनवेज खाउथिले, मीट खाउथिले, it was confined to lower classes, right? So meat eating was confined to lower castes. जति कि अधिकांश जो रेस्पेक्टेड लोक थिले जो माने, they were all vegetarians, right? Then he talked about untouchability. से कहउथिले कि अनटचेबिलिटी बहुत थिला इटे, जो लोअर क्लास लोक, लाइक व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बाहर रहउथिले, आउटस्कर्ट्स रे नॉर्मल जो लोक मानस रहउथिले सेट रहउथिले, एंड व्हेन दे यूज्ड टू एंटर द सिटी दे हैव टू मेक नॉइज यूजिंग ए स्टिक, तळे बाड़े स्टिक रे नॉइज करि जिबे, सो दैट अलगा लोक माने जो अछन से जानि परिया माने आछन जो अनटचेबल ये हमें से साइड हे जिवे, राइट? जे ताका संस्पर्श रे आसीबे, राइट? तो ए बडा थिला। तो एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन आछी, माने हमें गुप्ता एज पढिबा, हमें ए पॉइंट रेज करिबा। तो गुप्ता एज जो हम कहउछु गोल्डन एज, is it really golden age in terms of the society, right? हमें जो कहउछु गोल्डन एज ऑल राउंड डेवलपमेंट थिला तमरो सोसाइटी रे, पॉलिटी रे, तमरो आर्ट कल्चर रे, सब थरे डेवलपमेंट थिला, इट्स अ गोल्डन एज, but really is the goldenness absolute? No, it's not, right? So one of the reason is this society रे untouchability थिला, हमें कहउछु इट्स गोल्डन एज सोसाइटी पूरा बहुत भलो कंडीशन थिला, but reality is something different, right? So problem is what, you know, हमें जो इंटरप्रिटेशन पढुछु हिस्टोरियंस मन करो, इट्स ऑलवेज अबाउट द टॉप क्लास, वी नेवर स्टडी अबाउट द कॉमन मैन को, हमें जो कोन कोन सबल्टन अप्रोच हमर नहीं, राइट? एबे प्रोबब्ली सेटा बेसी डेवलप होची, बट सेटा में जहां भी हम सोर्सेस लिखा है ना, नोबडी टॉक्स अबाउट द कॉमन पीपल, नोबडी टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम अबव,
रॉयल क्लास कौन होतला किंग रो को युद्ध लड़ीतिला किंग रो कोन अचीवमेंट्स दे टॉक अबाउट दिस nobody talks about common लोक को केमिति लाइफ थिला तांगर इकोनॉमी केमिति थिला तांगर सोसाइटी केमिति थिला nobody talks about that right तो ए जो फॉरेन अकाउंट्स रा एडवांटेज है मेन एडवांटेज है ना से माने एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी कोन सोसाइटी रे कोन से माने विजिट करन डिफरेंट जगह विजिट कला जहां देखंदी से लिखंदी अधिकांश right though there sometimes biasness was there sometimes ठीक है किंग रो इन्फ्लुएंस आसी कोन जहां भी हो biasness रहउतला but most of the times whatever they see the right तो they mention common people तमे एई जिंस ना अलगा सोर्स पाइबनी अलगा लिटरेरी सोर्सेस इट इज फुल ऑफ बायसनेस right because जो इंडिजिनियस जो सोर्सेस उडा अछि who writes those things जे किंग रो एम्प्लॉइज माने राइट कोर्ट पोएट अछंती एबे हरिसेन केबे भी समुद्र तनारे एगेंस्ट लिख परिबनी वर्णभट्ट केबे हर्षवर्धन एगेंस्ट लिखिबनी तार से चाकरी करछि से right? So that is a problem, right? Biasness as is. So they always write good things about the king, and the complete your description is about upper class, upper society. Nobody talks about this common people. If foreign accounts are advantage set, right? They tell the ground reality. Common people king अवस्था थिला. Okay. तो हाँ तो ये कहते अनटचेबिलिटी अच्छी हैला से जो मु लिखि दिली डिटेल्स लिखि दियो हैला मु कि जेतोले अनटचेबल लोक whenever people of low class they enter the city, they have to make noise with a stick, right? Generally they stay in the city outskirts stay karanti, and whenever they enter the city they have to make noise, right, with a stick while entering. Okay. Peaceful society तापर लोककर mutually relation भलो थिला mutual trust थिला and mutual good relation थिला cordial relations थिला. It is almost समस्ते इटा कहइछन्ती राइट सोसाइटी लोक माने लाइक इवन मेगास्थिनिस भी कहिथिले राइट ते मिली मिसी रहउथिले का अगेंस्ट बेसी के लॉ रो सहारा रो नथिले एंड ऑल लाइक सिमिलर पॉइंट्स राइट हां पीसफुल सोसाइटी एंड ए जो कहथिले बडे से आउ जथिले के क्राइम बहुत लेस थिला क्राइम रेट इज लो राइट ए जिंसटा द पीसफुल सोसाइटी ठीक अछि बट जो क्राइम जो कहउतले ना पूरा पीसफुल थिला देयर इज नो क्राइम इट इज द प्रॉब्लम से कहउतले देयर इज नो क्राइम एटा एक्चुअली टिके नेगेटिव का हमें देख अलगा जगह देखु ना एक फॉर एग्जांपल वेनसांग का अकाउंट देखिबा से कहउतले कि सोसाइटी रे बहुत क्राइम थिला दो टाइम पीरियड वाज डिफरेंट बट हां एटा टिके डाउटफुल थिला कि एमिति कि हबो कि जमारो क्राइम नै हाँ से जो क्राइम नहीं इतरे से ଗୋଟେ पॉइंट କହିଥିଲେ कि it is possible to travel from one place to other without any problem hassle free travel से पॉइंट लिखि दियो क्राइम रेट लो रे कोन କହିଥିଲେ कि तमे one point रू another point तो travel करिवो it is hassle free right किसी तो क्राइम वगैरह नहीं that is safe completely safe it is safe to travel from one place to another without any hassles right crime rate was low then से कहउतले even जो तमरो what do you call your law and order was liberal law and order जहां भी तमरो जो punishments थिला right or the justice delivery system I would say right judicial system liberal थिला काफी there was no like death penalty ହେଲା death penalty नथिला liberal थिला normal punishments fines and all but death penalty नथिला right okay
So this is about your society. Okay, से कहते peaceful society थिला, crime rate low थिला, right? लोक माने एक दूसरे ट्रस्ट करथिले, cordial relationship थिला लोक माने भितरे, and बहुत safe थिला, crime rate was low, it was possible to travel from one place to another without any hassles, right? Untouchability थिला, जेतलो lower caste लोक आसी he has to make sound with a stick and enter the city. Look, generally, most of the people, the respected people, they are like vegetarians. Non-veg only, the lower classes, loco, samane खाउଥିଲେ. Judicial system liberal थिला, death penalty नथिला. सर लो क्राइम हाँ. नो क्राइम कौन कहते लो क्राइम Crime से नो कहते क्राइम crime कौन बेसी कहते नथिला. माने लेस क्राइम No or low, क्राइम no लिखले चलेगा उससे नहीं. Like he कहते काफी peaceful थिला, ହେଲା. ମାନେ ଏତେ low no ମାନେ ଛୋଟ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏତେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ନଥିଲା ଲାଇକ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମାନେ ତମେ ଏବେ ରାତି ଅଧରେ ବି ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ କରି ବିକଜ ଏମାନେ କାଫି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଥିଲେ ନା ଏମାନେ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଦର ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ so କାଫି ସେଫ୍ ଥିଲା while traveling from one place to another like there is no problem it was almost crime free. Hello, sir. Sir, elite class people, हाँ मैंने sir, elite class people animal kill କରୁନଥିଲେ, onion, wine କି garlic ବି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ rich people temple building କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କହିଥିଲେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥା ତାହେଲେ ଓନିଅନ ଗାର୍ଲିକ ଖାଉନଥିଲେ କହୁଥିଲେ onion, wine ଆଉ garlic sir ଗୋଟେ sources ରୁ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ sir rich people ବି temple building କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଲେଖିଥା ତାହେଲେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଲେଖିଦବା add କରିଦିଅ point ରେ ओके तो rich people temple building କରୁଥିଲେ and apart from vegetarians ସେମାନେ wine ହେଇଗଲା onion and garlic ବି ଖାଉନଥିଲେ add କରିଦିଅ ତାହେଲେ ओके अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ actually ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ମୋର ଆସିଥିଲା like we'll do it ଆମେ ଅପସନାଲ ଯୋଉ କରିବା ତ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲାଇକ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଡିସନ କରୁଛି ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଏତେ ଡିଟେଲ ଆମେ ସୋର୍ସେସ ପଢିନଥିଲୁ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ଥର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆମର ଏତେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କି ୟୁପିଏସସି ରେ ସେମାନେ କପି କରିବେ ତ କାଫି ଜିନିଷ ଆମକୁ ୟୁପିଏସସି ଲେଭେଲ ଗୁଡା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ଆମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ କରିବା ହେଲା ତ ତମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଇଦେବି ହେଲା ତ ତମେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ କ୍ଲାସ ନୋଟ୍ସ ୟୁ ଡୁ ସମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ ୱେଲ୍ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଅ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି few people those who are writing regularly ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ରାଇଟ୍ ତ ତମମାନେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ କରିଦିଅ ଲାଇକ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ ହେବେ ଇନିସିଏଟିଭ ରୁ ହେଲା ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମେ ବି ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦବା and apart from the class notes you try to search in like internet and ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଡିସନ କରିହବ କର so that we get a good answer ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଗେରା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ କରନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଡ କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ମିଳୁଛି ଅଲଗା ଆଡ କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କର ଓକେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଇକ ଆଇ ୱାଜ ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ହବ and in the end we'll have a compilation as well right ଆମର ଭଲ ଗୋଟେ notes ଟେ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ sources ଟା ହେଲା sources ମତେ କି ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ କିଛି କିଏ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି ହେଲା sources ଟା କୋଉ ଟପିକ କିଏ ନବ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି ତ ସେ ମତେ ଭଲସେ ଲେଖିକିରି ଗୁଗଲ କରିକି ଲେଖିକିରି ସେଟା ମତେ ଦବ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପାରିସନ କରିକିରି ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ଆମେ ତା କମ୍ପାରିସନ କରିକି ଆମେ ରଖିଦବା ହେଲା ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଜଗିବାନି so once the chapter is over we'll have the compilation ତାକି ପରେ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ଇଜି ହବ ଓକେ सोसाइटी ହେଲା ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜିଅନ
मेजर से रिलीजन विषय ही कहथिले बिकॉज ही विजिटेड इंडिया फॉर रिलीजियस पर्पस ओनली, तो से रिलीजन विषय भी काफी किछि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देइथिले, राइट। सी कहथिले कि बुद्धिज्म हम नॉर्थ वेस्ट रे काफी प्रॉस्परस फ्लोरिश होछि, नॉर्थ वेस्ट रे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे बुद्धिज्म लाइक गांधार एंड काम्बोज से पार्ट रे हमरो काफी नॉर्थ वेस्ट रे बुद्धिज्म प्रॉस्परस अछि, तो बुद्धिज्म फ्लोरिशिंग, but it has declined in your Gangetic Valley. जो birth hitla, the origin place la Buddhism ra core reason, right? Core reason thila Buddhism ra, right? So A to decline Korean Buddhism. Now it has shifted to northwest, right? A part re Buddhism flourish hochi, it has declined here. It is the main core reason thila. So it would observation देइथिले, सी काफी नीचे कहले सी काफी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से नॉर्थ वेस्ट विजिट करछन्ती, राइट। काफी लोकल बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से नॉर्थ वेस्ट विजिट करछन्ती, सो ही विजिटेड लोकल बुद्धिस्ट monasteries in northwest. हम कहूथिली लाइक तक्षशिला, राइट, काफी तक्षशिला काम्बोज से रीजन रे अफगानिस्तान से काफी विजिट करछन्ती, एंड इवन ही सेड वन थिंग कि सी गोटे डिस्क्राइब करथिले कि बुद्ध ऑफर्ड हिज बॉडी टू अ स्टार्विंग एनिमल, right? So Buddha like here refers to like some Buddhist monk, right? Enlightened person, जो Buddhist monk जे निर्वाण पाई चंती, so उन starving animal को से निजरा meat निज body part तको खाया दोथिले, तको से गोटे एटा गोटे describe करथिले, that thing also you mentioned, right? तक्षशिला रे he mentioned starving animal, ठीक है। अरे कौन है, चालू नहीं एटा, okay। So this also you mentioned कि तक्षशिला रे he has described during his visit, there was a Buddhist monk, right, who fed his body part to a starving animal. Then he talked about Mathura visit करके he talked about 20 biharas, right? 20 Buddhist biharas in Mathura. What do you mean by biharas? Biharas माने कौन? बिहार माने कौन? living What do you mean place by Bihar? of living place of Living monks, place of monks. Buddhist monks. Okay. So Buddhist लोक माने कौन? जो तांकर what do you call it? Boarding place, right? जो रहउतले से माने, that is biharas. तो से कहथिले कि 20 टा गुड बिहारास मथुरा देखिथिले, right? Then he
talked about सी कहले कि देन कपिलवस्तु हेगला जोटा सब ओरिजिनल बुद्धिज्म प्लेसेस थिला गया हेगला कुशीनगर हेगला राइट दिस वर द लाइक बुद्ध का टाइम रे एडा सब मेजर जो कोर रीजन थिला एई सब जगह रे से कहउछन्ती कि बुद्धिज्म इज डिटेरियोरेटिंग राइट बुद्धिज्म इज डिटेरियोरेटिंग ए सब जगह रे ओके सो बेसिकली लाइक दिस हम जो इनिशियल स्टेटमेंट लिखले तो तार ही डिस्क्रिप्शन तळे अछि कि तमरो बुद्धिस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिश होछि एंड गैंगेटिक वैली डिक्लाइन हेलानी नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिश रे से नॉर्थ वेस्ट जो बुलचंदी तक्षशिला तार डिस्क्रिप्शन दैचंदी कि तक्षशिला रे तमरो बहुत सारा लोकल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बहुत सारा आसीछि राइट तक्षशिला रे से कहउचंदी गोटे बुद्धिस्ट मॉन्क को देखले जे तार बॉडी पार्ट गोटे स्टार्विंग एनिमल को फीड करूछि राइट एंड देन ही मथुरा रे से कहउछन तमरो यदि कोडीटा यदि नुआ बिहार रे आसीछि राइट एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट दिस ओल्ड प्लेसेस जोड़े बुद्धिज्म जो हब थिला पूर्व राइट कपिलवस्तु हेगला गया हेगला कृष्णनगर हेगला तो एट से कहउछन बुद्धिज्म डिक्लाइन हेगला ओके देन आल्सो ही टोल्ड वन मोर थिंग सोसाइटी रे तमरो रिलीजियस टॉलरेंस अछि ओके एटा ठीक हमें परे देखिबा हला सी सेतरे कहले कि तमरो सब तमरो लाइक बुद्धिज्म तो अछि बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन माने काफी तक फोकस दिया जाउची हला अपार्ट फ्रॉम दैट इवन तमरो ब्राह्मणिज्म राइट योर वैष्णविज्म हो तमरो शैविज्म हो जैनिज्म सब लाइक दे आर coexisting right all are coexisting this is religious tolerance अच्छी different अच्छी so buddhism तो state religion no sorry buddhism state religion कह देली buddhism ए टाइम state religion नथिला बट हाँ से कहले बुद्धिज्म सहित गोटे सोसाइटी रिलीजियस टॉलरेंस अच्छी तो बुद्धिज्म सहित वैष्णविज्म हेगला शैविज्म हेगला जैनिज्म हेगला ऑल आर कोएक्सिस्टिंग राइट ही टॉक्ड अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस दिस पार्ट विल डिस्कस लेटर राइट तंगरा अब क्रिटिसिज्म क्रिटिकल एनालिसिस ए पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करिवा okay so this is about your religion right so religion mostly overall mind rakhita he talked about Buddhism because he was a like Buddhist monk he came to India in search of like to enhance his knowledge on Buddhism to search for original Buddhist text so tankar jo major jo description thila it was about Buddhism only right and then से तांगर ऑब्जर्वेशन कहले कि बुद्धिज्म जोड़ा हब थिला सेटा शिफ्ट हे गलानी वर्तमान अर्ली इट वाज इन गैंगेटिक वैली नाउ इट हैज शिफ्टेड टू योर नॉर्थ वेस्ट राइट देन ही हैज गिवन सम इंस्टेंसेस जोड़ा हमें कोट करियो पड़िबो हमु राइट सिंपली राइटिंग द स्टेटमेंट इज नॉट इनफ सो यू हैव टू कोट से किमिति तमरा देख कहउछन कि तक्षशिला रे तमरा मोनास्ट्रीज आसी तक्षशिला रे से ओड मॉन्क को देखिले जे फीड करछि निज बॉडी पार्ट को then Mathura like Biharas dekhile se then he talks about this old hub of Buddhism like jodi ki tamara Buddhism deteriorate hela decline kari gala right so this is about his viewpoint on religion okay next देखियो से इकोनॉमी विषय कम कहिथिले ओके सो इकोनॉमी रे से कहिथिले काफी कि बहुत प्रॉस्पेरिटी अछि सोसाइटी रे लाइक काफी प्रॉस्परस सोसाइटी नो डाउट थिला भी तम चंद्रगुप्त टाइम रे प्रॉस्परस थिला किंतु सी गोटे जिंस कहिछन्ती प्रॉस्पेरिटी रीजन कोन एई टाइम रे मेन रीजंस कहिछन्ती रोमन ट्रेड हला मेन रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी राइट सो रीजन टा भी कहिछन्ती लाइक जोटा कि एकदम पूरा करेक्ट रीजन हमें डिस्कस भी करिया गुप्त राज विल सी कि तमर जो रोमन सिल्क ट्रेड स्टार्ट हेतला पोस्ट मॉरियन टाइम रे राइट सो सेटा पीक पहुंच जाइतला ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड राइट एंड दैट वाज द मेजर जो इकोनॉमी रे कंट्रीब्यूट होतला तमर जीडीपी रे द मेजर कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम द ट्रेड एंड कॉमर्स राइट तो एटा कहले ही टॉक्ड अबाउट पोर्ट्स
he talked about your Tamralipti port, right? See visit करछन्ती तो east से Tamralipti port visit करछन्ती. He talked about your revenue, right? See the government जो income, it was based on land revenue. Government जो income कोटु, it was from land revenue, and it was 1/6. 1/6 of the produce, right? He talked about charitable organizations, right? Charitable organizations like in the free hospitals, right? See, charitable organizations the royal king maintain korthile, right? Like there were free hospitals and all. So, and this we know Gupta AS was a welfare state, right? It was a more than the Mauryan Empire. Gupta AS was more welfare oriented, and that we know. The charitable organizations also maintain korthile king, free hospitals. Could ଆସିଲା କୋଉଠି link share ହେଲା ନା କଣ? ସେ link କୋଉଠି share ହେଲା କି? Link କୋଉଠି share ହେଲା? Link କୋଉଠି share ହେଲା କି? Link କିଏ ଦେଲା ଏଇଟା? ଯିଏ join କରିଛ link କୋଉଠି share ପାଇଲ କି link ଟା? ग्रुप रे आसिलो दीपक सर सेंड कर କୋଉ group ରେ? କୋଉ group ରେ? ग्रुप 4 Group 4 ରେ ଆସିଲା. କିଏ ପଠେଇଲା? ପୂଜା? दीपक सर एक्चुअली এটা মানে হিস্ট্রি অপশনাল না কি ক্লাস एक्चुअली সেন্ড कर History optional class টা এটা ଚାଲିଛି. ओके ओके सॉरी सर किसी लिखे नଥିଲେ खाली लिंक शेयर लाइक दैट Okay, okay. Okay, history optional class है just to चल ठीक ଅଛି चलो हम कंटिन्यू करिया. Okay, so what I was saying कि like see observe कर ले कि बहुत सारा charitable organizations तुम्हारा जो हमारा king maintain करथिले, like there were free hospitals, and then I would think this confusion create करथिले. Like at one place he's talking about prosperity. He's telling कि Roman trade थिला. Roman trade जो तुम्हारा economy बहुत strong थिला, right? But then he's contradicting, right? Next he's telling कि तुम्हारा medium of exchange कौड़ी सेल थिला. So कौड़ी सेल तमरा medium of exchange थिला. Now this is a little bit creating confusion, right? तमे जरा कहूचो कि तमरा prosperity अछि, society prosperity अछि because तमरा Roman trade चलीछि, right? तमरा tertiary activity अछि, तमरा काफी liquidity अछि, तमरा cash flow अछि, right? Because of trade and commerce काफी cash flow अछि. Then how you are telling कि कौड़ी सेल अछि? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁପ୍ତା ଟାଇମ ରେ କାଫି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ କୌଡି ସେଲ କାହିଁକି ଆସିଲା ହଠାତ୍, ରାଇଟ୍? ଫାହିନ୍ କହିଥିଲେ କୌଡି ସେଲ. ଦିସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ଏ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ ପରେ କି what is the significance of କୌଡି ସେଲ, like यार कौन ହେଇପାରେ, right? That I'll tell you. But just remember, he created confusion, right? When he was at one place, he's talking about prosperity. He's telling कि Roman trade तमरा थिला एई टाइम रे, tertiary activities थिला. At the next point, he is saying कि कौड़ी सेल थिला हमर medium of exchange. कौड़ी माने बुझ पारछो? ସମସ୍ତେ कौड़ी जानछो? Is sir sell?
ए जो हमरो कौड़ी खेल हुए जो कौड़ी तो दैट कौड़ी सेल तमर कहउछन मीडियम ऑफ एक्सचेंज थिला ना दैट इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग दैट वी एनालाइज लेटर राइट एटा तमर कौड़ी सेल मान कहला सर बाटर सिस्टम विषय कहछन he talked about barter system yes barter system सर चली थिला barter system थिला ही barter system तो थिला ही but then there was some medium माने barter system देखो barter system में problem कौन कहला so barter system needs a double coincidence of want ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମତେ ଡାଲି ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଅଛି I have to find someone ଯାହା ପାଖରେ ଡାଲି ଅଛି ତାକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର right barter system is a problem barter system में there should be double coincidence of want ଖାଲି हेलो सर ମତେ ଡାଲି ଦରକାର ହଁ सर एक्सक्यूज सर ये क्लास टा केतेबेଳୁ स्टार्ट हेलानी कि सर କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆମର ଆମକୁ 5:30 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ओ सर ଆମକୁ ଏବେ ମେସେଜ ଆସିଲା ତ ହଁ ओके ମାନେ सर ଗ୍ରୁପ कंटिन्यू 4 ରେ ଆସିଲା आज्ञा ग्रुप ହଁ 4 ଠିକ सर ଅଛି we'll see later ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ କ୍ଲାସ୍ ନା ଏଟା ଜିଏସ୍ କ୍ଲାसेस ନୁହଁ अरे ग्रुप 4 रे का पाए एक्सेस अछि दे तो मुझे ग्रुप 4 रे नहीं मते का पाए एक्सेस अछि लिखि दियो एटा ऑप्शनल क्लास टा मे बी कोन कंफ्यूजन है थियो ओके सो व्हाट आई वाज सेइंग हां देखो बाटर सिस्टम थिला ही बट बाटर सिस्टम रो प्रॉब्लम एटा राइट सो सेति पय टिके मीडियम नले कॉइन काई आसिला यदि बाटर सिस्टम थिला ताले 5 मार्क कॉइन काई आसिला 6th सेंचुरी बीसी रे आसी न थांदा राइट बाटर सिस्टम प्रॉब्लम अछि बाटर सिस्टम रे ऑलवेज यू नीड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मो पाखरे अच्छी डाली मो पाखे अच्छी चाउल मते डाली दरकार आई हैव टू फाइंड समवन जा पाखरे डाली अच्छी ताकू चाउल दरकार राइट देन ओनली हम दिने एक्सचेंज कर परिबो नले एक्सचेंज कर परिबोनु किंतु कॉइन आसे लाभटा कोन कॉइन आसेले किछ असुविधा नै माने मु जाक दरकार मते डाली दरकार मु कॉइन ताकू देली मु पैसा देकी मु डाली आनी देली जाकू मु चाउल पाखे अच्छी बिकी देली जाक चाउल दरकार ताकू मु बिकी देली जा सी मते पैसा दे देला बदल तो that is okay मतलब आराम से तुम्हारा that exchange can easily happen right तो सेति में किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी थाए तो बाटर सिस्टम तो थिला ही प्लस दिस वाज देयर ओके तो ए पॉइंट आई मन रख राइट तो द कॉन्ट्रडिक्शन ही हैज क्रिएटेड राइट बिकॉज़ कोडी सेल जेटा हम कहू एक्सचेंज रे अछि इट शोज योर इकोनॉमिक डिक्लाइन कहीं ये तमरो देखौची तमरो मनी सर्कुलेशन नहीं लाइक कॉइन सर्कुलेशन नहीं तो मन रखिबो जत्ते अधिक कॉइन सर्कुलेशन सेते बेसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सेते अधिक तमरो हम जानिबा कि ट्रेड एंड कॉमर्स भलो चल जब ट्रेड एंड कॉमर्स भलो थिबो देखिबो अधिकांश जो एक्सटर्नल ट्रेड ता हमरो सबले करेंसी रे हुए बाटर रे हुए नहीं बाटर खाली गा लोकल ट्रेड ता तम बाटर रे ही पारे मतलब एक्सटर्नल ट्रेड करिवो रोमन ट्रेड करिवो एटा तमरो बाटर रे हबो नहीं राइट तो दिस इज जेतल तम ट्रेड एंड कॉमर्स भलो थिबो यू विल सी कि तमरो सेतबेले कॉइन सर्कुलेशन भलो थिबो करेंसी सर्कुलेशन भलो थिबो राइट तो एट वन पार्ट प्लेस ही इज सेइंग प्रॉस्पेरिटी अछि आउट टाइम में तो कहउछ कौड़ी सेल तमरो कॉइन नहीं लैक ऑफ कॉइन्स और लैक ऑफ योर this liquidity it shows your economic decline से टाइम में इकोनॉमी डिक्लाइन थिला और इवन द लैक ऑफ प्योरिटी एज वेल राइट द कॉइन प्योरिटी भी कमी हिच ताहले भी हम कहबे इकोनॉमी डिक्लाइन हिच एटा गोटे साधारण हमर गोटे जो मार्क्सिस्ट अप्रोच एनालिसिस करंती दिस इज द वे कि तमते कॉइन रो नंबर कमी हिची ताहले भी इकोनॉमी डिक्लाइन हिची तम कॉइन रो प्योरिटी भी कमी हिची ताहले डिक्लाइन हिची इवन जदी अलगा किछि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होछि लाइक दिस कौड़ी सेल और जो early medieval age रे there was metal churnis right metal powder churni use होतला that also shows कि तमरा this economic decline has happened right so this is about what he said about economy but one सर thing to note is that सर आ गोटे but पॉइंट थिला सर हाँ को सर शिप बिल्डिंग के से क्रिएट करथिले सर इकोनॉमी रे कहथिले शिप बिल्डिंग थिला से कहथिले ओके ऐड कर दियो दले
सर से तो निज कथा को कॉन्ट्राडिक्ट कले ना प्रस्फोरस इकोनॉमी बोली कहैछन्ते एपटु करिसेल रा भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज रो यूज होय छै केमते कोन डिक्लाइन He's है creating confusion. Yes, he has done that. So that's what I told na कि he has created little bit confusion, right? आराम चलो एबे ही कहि दो जार problem आराम कहूची. Actually confusion create करछन्ती because when you are talking about codicil, that means coin कम थिला. Coin circulation कम थिला त माने economy decline. Right? This is contradicting. किंतु आरा आउ गोटे explanation अछि. The explanation is maybe the gold coins ଆମେ କହୁଛୁ ଅଧିକ ଥିଲା, the gold coins was used as a medium of exchange only for the higher class or trade and commerce. जो ऊपर वाला classes ରହୁଥିଲେ, nobility ରହୁଥିଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଘର ରହୁଥିଲେ upper class, probably they were using those gold coins or it was used for external trade. But the middle class or the lower class, ତାଙ୍କର ଯୋଉ medium of exchange ଥିଲା, it was not coins, it was codicils. That is another explanation to show कि चलो किसी मॉनिटरी प्रॉब्लम नथिला, राइट? काहे हमें कोडिसेल टा रिपीट देखिबा, ए कोडिसेल टा हमें देखिबा हर्षवर्धन के टाइम में देखिबा, हला हर्षवर्धन अकाउंट टाइम में गैप अछि, राइट? ही वाज इन, दिस गाय केम इन 4th century. This Huensang came during Hर्षवर्धन, Huensang came in 7th century. और 300 वर्ष डिफरेंस अछि. बट Huensang भी कहिथिले तमरो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज चूर्णी एंड कौड़ी कहिथिले तमरो, राइट? तो एक्चुअली सेई टाइम रे एक्चुअली प्रॉब्लम हे जाइतला. सेई टाइम रे देयर वाज दिस प्रॉब्लम कि मॉनिटरी एनीमिया थिला. हम देखिबा सेटा डिस्कस करिया. सेटा मॉनिटरी सर्कुलेशन कमी आस्थिला हर्षवर्धन के टाइम रे बिकॉज़ फ्यूडलाइज थिला. किंतु एबे जो एटा जो कोस कौड़ी सेल, सो प्रॉब्ली दिस वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? तमरो मीडिया जो मिडिल क्लास लोअर क्लास करो, प्रॉब्ली मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज दिस कौड़ी, राइट? सो दिस कैन बी टेकन इन दिस वे. नहले काई कॉन्ट्राडिक्ट करिवे, जने काई कॉन्ट्राडिक्ट कर, जने कहउछ यदि रोमन ट्रेड प्रॉस्परस थिला, सोसाइटी रे काफी प्रॉस्पेरिटी थिला, हठात से काई कॉन्ट्राडिक्ट करिके नेक्स्ट कहबो कि कौडिसेल यूज होतला. तो प्रॉब्ली हिज इंटेंशन वाज टू से दैट कि कौडिसेल लोकल एक्सचेंज होतला फॉर द लोअर क्लास ये वगैरह माने जो मीडियम मध्य वर्ग एंड जो लाइक तळ लोक मानकर यूज होतला, एंड दिस गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ट्रेड और हायर क्लास माने यूज करथिले, राइट? प्रॉब्ली तांकर एटा इंटरप्रिटेशन थिला. So we'll take it that way. Now, what did he tell about polity? Right? The important thing to note is that he didn't say anything about the polity, right? He didn't say anything. Nothing. Right? He didn't mention about any king. से को भी की रूलर विषय मेंशन करना थी. से किछि डिटेल्स देना थी कि पॉलिटी विषय किछि करना. Nothing on polity or rulers. Okay? So this is about his account, Fahin's account. And one more thing to note, and I'll mention it starting रे हम ऐड कर दो सेटा. Fahin का जो account, it was not detailed. His account was not a detailed account. Right? Like Huensang gave a very detailed account. Right? India रे कौन चलता like about the society हेगला, about economy, like about polity. He gave a very detailed account. काफी बेसी travel करते हुए Huensang, right? He traveled almost complete India. And he traveled from northwest till the south India, right? He traveled like Tamil Nadu travel करते हुए. Right? So that will come next time discuss करिएगा. आंकर वाला टी problem है, he has not traveled मैंने इसलिए extensively travel करना थी. टी aged लोग थे, like he was a man of 60 years old. And बेसिक ट्रैवल करना है तो ताकर अकाउंट में बेसिक डिटेल नहीं. एंड पॉलिटिकल बिल्कुल से कहना ही डजंट से एनीथिंग अबाउट द पॉलिटी. Okay, so this is about Fahin's account. Let's do a critical analysis, right, and conclude कि हमें like ताकर अकाउंट में से कौन हमें conclude करेगा. Let's see on that. Okay. So critical analysis of Fahin's account.
The first thing, he gave a very ideal picture to society. So whatever, like जो कहिथिले कि तमर peaceful society थिला, like mostly vegetarian खाउथिले लोक, lower caste non vegetarian खाउथिले, जो wine पिउ नथिले, right? Like wine पिउ नथिले कि तमर onion garlic खाउथिले, right? काफी peace loving थिले, तमर mutually तमर trust थिला, mutually cordial relations थिला, right? So when he was telling all these things, so probably city के बहुत ideal picture society देथिले, right? Maybe. So he didn't go depth. निश्चित there will be some exceptions as well, but he gave a very ideal picture, ଗୋଟେ theoretical picture ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ main ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯଦି, his focus was mainly Buddhism. You just see his account, the religious जो pictures ଦେଇଥିଲେ, the focus was completely Buddhism. Buddhism କୋଉଠି prosperous ଅଛି, କୋଉଠି ତମର Buddhism decline କରୁଛି, right? He didn't talk about other religions, just except कि କହୁଥିଲେ कि because he gave a very ideal picture, he said कि peaceful coexistence ଥିଲା between all the religions, right? But see his focus, ସେ କହୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ଜାଗାରୁ decline ହେଇଗଲାଣି, hub decline ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ north west ରେ ସେଟା flourish କରୁଛି, ତମର decline ହେଇଗଲାଣି, ତମର like जो old hub ଥିଲା ତାର ସେ decline ହେଇଗଲାଣି, right? So like he was focused more on Buddhism वाला था, right? अलगा religion अलगा विषय से बेसी डिटेल किसी कही नाहंती। Okay. अच्छा, I would like some of his descriptions were like wrong, right? Some descriptions were wrong, right? Like for example, when he said कि there is no theft, कहते ना गोटे point to out point जिबो, like there is hassle free, there is no problem, like almost like he told zero crime, right? No crime. That is wrong. ଆମେ କିଛି ଅଲଗା contemporary sources ଜାଣିବା ପାଉଛୁ theft was there, right? Then he told there is no death penalty, but ଅଲଗା sources ଜାଣିବା ପାଉଛୁ ନା ସେମିତି ନାହିଁ, death penalty was there, like for certain crimes even death penalty was given, right? So he no theft, death penalty, like he gave a very ideal picture of the society. He gave a very idealistic picture of the society, and ये सब details जानिनांती, मतलब what according to me, मैंने more interpretation है कि ये बेसिक ट्रैवल करनांती, right? तो ये जहाँ किसी ट्रैवल कर लिखिचंती, बाकी तांकर हाई लेवल जहाँ जानले अन्य सुनले तो ताबिस लिखिचंती, he gave a very ideal picture, real society की real गांव वहाँ जाके सबड़ से बुली नांती, तो very idealistic picture ଦେଇଛନ୍ତି कि society रे peacefully सब रहउचंती, सब peaceful, सब religion का tolerance अच्छी, like लोग माने trust करउचंती, एक दूसरे को बहुत cordial relation अच्छी, crime नहीं, theft नहीं, right? तो death penalty नहीं, judicial system very liberal. He has given a very like high level, superficial picture to ଦେଇଛନ୍ତି, right? Next, it's not a detailed account, not detailed account, right? So just କହୁଥିଲି, unlike when saying he has not given a very detailed account, just ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ describe କରିନାହାନ୍ତି, okay? So this is about the critical analysis, right? He has given a very idealistic picture of the society, right? So his focus was mainly Buddhism. ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି inherent defect ଥିଲା, କିଛି କିଛି information ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, like no theft ହେଇଗଲା, no death penalty, ଏଗୁଡାକ ଅଲଗା sources, contemporary sources contradict କରୁଛନ୍ତି, right? And ତାଙ୍କର detailed account ନଥିଲା, unlike Huan Senଙ୍କର detailed account, ତାଙ୍କର detailed account ନଥିଲା, right? This is about the critical analysis. Now to conclude, how we will conclude this? Yes, though it has many inherent defect, idealistic thila, ye thila, but still, like this foreign accounts, no, they give us a alternate lens, right, to view the our Brahmanical. ଏବେ ତକ ଯାହା literary sources ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, major literary sources, it was through a Brahmanical lens, right? It was talking about your society from
from above, right? तमर nobility कौन king कौन କରୁଛି କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି upper class କौन କରୁଛନ୍ତି, right? king को achievements कौन କୋଉ temple build ହେଇଛି କୋଉ sculpture build ଚାଲିଛି. Nobody talks about your lower class, right? He has talked about lower class, like he has talked about untouchability, he has talked about society रे कौन ଚାଲିଛି and all. So that ଗୋଟେ alternate lens I'm going to provide କରୁଛି, right? So now let's just to end this, I would say ଗୋଟେ alternate lens I'm going to ଦଉଛି, right? Apart from the alternate lens to the, I would say indigenous, not Brahminical, I would say indigenous sources, right? The indigenous sources of problem कौन? Indigenous sources either they are religious, right? Religious sources only you will get a Brahminical point of view, right? You will not get any other prospects. Whatever you see in a religion, like be it Vedas, be it Puranas, be your epics, like almost like all of them, you would see a Brahminical point of view because it is composed by a Brahmin. Brahmin wala class composed करछन, so you will see a Brahminical point of view. You will not see any other interpretation. But you would alternate ଗୋଟେ lens ଆମକୁ provide କରୁଛି. Sorry, then coming to other secular sources, ଯାହା ବି secular sources ତମେ ନେଇଯାଅ, ତମର be it your ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ତମର like ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ହର୍ଷଚରିତ ହଉ, whatever, it has biasness. ତାର ସେମାନେ ତମର king ର court ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, तो किए भी तार बॉस अगेंस्ट लिखिबो, nobody will write against the boss की से एमि माड़ खाइतिले एडा हारि के आस्तिले, nobody will write like that, right? हर्षवर्धन तमरा चालुक्यन किंग पुलकेशिन to हारि हेतिले, but no, like हरिशन didn't talk about that. He told कि जाइतिले तमरा आइहोल युद्ध लागितिले पुलकेशिन सहित, but he didn't tell the result. माड़ खाइ के आस्तिले से हारि हेतिले, right? So nobody will write about that. तो ये जो indigenous sources of problem is that be it religious, be it secular, it will be either a Brahminical lens or it will be prone to these defects, right? Biasness will be there. Nobody will write against the bosses. But this foreign accounts mostly advantage corner. These are guys are travelers, and most of them they have written these books once they reach China. China फेरी कैसे लिखी चलता है तो ताकर किसी खतरा भी नहीं था कि बाड़े दो ऐसे कि धमकी दे दोगे नहीं कि असुविधा नहीं सीधा कर एक एनालिसिस कर ले देख ले घर जाके बही लिखी आसिले बही लिखी छाड़ ले, right? So good alternate lens दोचे हम good indigenous source को like compared to indigenous sources, it has given an alternate lens to view the society. Okay, to the society from below हमें देखी पड़ते on ground reality पड़ते untouchability थिला on ground reality हम देखी पड़ते. And finally to like end the answer, I would say कि actually ये हमको देची गोटे like this description has given us insight, right, to the so-called golden age. The golden age coach, so-called golden age as claimed by the nationalist historians, right? So taku analyze kariya pai, it has given us more insights. These descriptions they give us more insights to the so-called golden age. Tara goldenness ko हमको access kariya pai गोटे आउरी हमको से insight दोच, right? So this is like you have to write in conclusion. Okay, so that defect अच्छी, yes defect अच्छी, but हमें तो critical analysis देखी था defect रा देखी ले, but then still like as we have been discussing all the answers never end in a negative note. जहाँ भी source था critical analysis कॉलर हम देखो negative देखे थे negative कौन थिला, but always end that in a positive note, right? तो आर positive कौन आ positive वाला हम गोटे alternate lens दोची गोटे Brahminical point of view की आउटा जो biasness रोथुला अलगा sources रे सेटा नहीं, right? Society from below common man कौन करछन तांका अकाउंट मिलुची on ground reality जानिए पहुंचो हमें out especially about Fahim, right? कि हमको ये this description gives us more insight to assess the goldenness of the Gupta age, right? Clear?
didn't mention any एटा भी हमें लिखि दबा एटा didn't mention any king or about the polity एटा भी हमें critical analysis लिखि दबा right nothing on polity or king okay clear next time jiba Wensan any doubt on this Wensan account jiba किछ doubt अछि fine करो No, sir. okay अच्छा Wensan केबे आस्ति का टाइम रे आस्तिले tell me Sir, Wensan के हर्षवर्धन time During Harshavardhana in Harshvardhan के time and the time period 7th century, what was the time period Sir, 7th century 7th century AD. right like 7th century AD and Harshvardhan के time आस्ते right okay fine चलो तो लिखि दबा हमें so he visited in India during हमरो 7th century AD का टाइम रे हर्षवर्धन को टाइम रे आस्तिले HB ता बही ना कौन थिला what was his book name what was his book name सीयूकी कौन सीयूकी CUK right very good right ता बही ना थिला CUK and it was the longest and most detailed foreign account it was the longest and most detailed foreign account okay so 7th century AD ରେ ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷवर्ଦ୍ଧନ ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ his book name was CUK and it was the longest and the most detailed foreign account ଠିକ ଅଛି okay କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର objective what was the objective କାହିଁ ଆସିଥିଲେ India what was the objective why he came to India Sir, went to translate Buddhist knowledge into Mandaric language. okay like the same ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି religious purpose buddhism ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ right so he was not satisfied with the existing so not satisfied with the existing Chinese translations of Buddhist text right so he was not satisfied with the jaha bhi Chinese translation thila Buddhist text ro China re ta satisfied nathile sethere se right so he wanted to get the original Buddhist text right same as your Fahim and next is he wanted to learn the doctrines of Buddhism from the Indian Buddhist monks right learn doctrines of Buddhism right same whatever fine ko ankara same likhiyo kichhi asuna like they have traveled for religious purpose or agis intention nathila they were Buddhist monks so they were not satisfied with the existing translations Chinese translations of the Buddhist works available in China so their intention was to get access to the original Buddhist works in India and then take them back to China right and to learn the doctrines to get more knowledge on the doctrines of Buddhism from the Buddhist monks. India the Buddhist monks they were the experts. तांको तो आउरी Buddhism ऊपर deep knowledge पाया पे से an objective थिला. That's why he traveled to India. Okay. And then आको detailed अच्छी like though this guy has not fine detail लिखी ना right. So what तांको हमारे जो वर्क ରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ହଁ ସେ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ କି ତମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ତମର ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତ ସିଏ ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବିକଜ ହି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଫ୍ରମ ଦେୟାର ସୋ ସିଏ ତମର ତକ୍ଷଶିଲା ପେଶାୱର କଶ୍ମୀର ଜଲନ୍ଧର need not remember all of this right just ଖାଲି ତମର
notes rakhita to just to get the knowledge kahi ki ankara detailed account thila, right? So that will help you. Kannauj ro bahut detailed account deythile, kannauj ro bahut detailed account deythile. Ajodhya, Rajagriha, Kamrup, Assam. Okay, प्रथम ହେଲା ରାଜକୀୟ ଉପରେ ବୋଧ ଗୟା, ବେଙ୍ଗଲ, then Kamrup ମାନେ ଆସାମ, then South India, like till Kanchi, right? Till Tamil Nadu, Kanchipuram se visit करथिले, right? Even he has stayed in like तमरा अमरावती रे, आंध्र रे से अमरावती रे, stayed in Amravati. Okay, so as you can see, like he has traveled. He has traveled from your he has traveled from your like ଏଇଠୁ ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ପେଶାୱର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛନ୍ତି, right? ତମର like then ତମର ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୋଧ ଗୟା, ସବୁ ତ ବେଙ୍ଗଲ, କାମରୁପ, right? So complete like South India, like almost like if you see the entire India has traveled. See his extensive travel, right? So he has traveled almost Mathura ହେଇଗଲା, Kannauj ହେଇଗଲା, right? Kannauj ହେଇଗଲା, like almost like everywhere he has traveled. Right? And he has given a detailed account of Kannauj. कोई फिर Kannauj का detailed account ଦେଇଛନ୍ତି? Why he has given a very detailed account about Kannauj? Anybody? Any idea? Kannauj detailed account କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ଧର୍ମସଭାରେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସାର୍ କନୌଜ ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଥିଲା? Kannauj ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, right? So obviously କ୍ୟାପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଠି ସେ maximum time spend କରିଛନ୍ତି. So that's why he has given a very detailed account about Kannauj. Okay. So the like this, just see my idea ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, but just have an idea while writing. You write he's in northwest ତକ୍ଷଶିଳା ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶ୍ମୀର ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ till Kanchi, and at least this basic ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ଲେଖ, starting from ତକ୍ଷଶିଳା till Kashmir, your Bengal, ତମର Assam, Kanchi, right? So all these things he has visited. It complete like almost whole of India he has visited, extensive travel karchandi, right? And he's known as a prince of traveler. He is known as prince among travelers. Okay, now let's see what he has given. Let's see his account. What was the political condition? See, तमरा a detailed account ଦେଇଛନ୍ତି about Harsha's rule. Harsha's administration रो detailed account ଦେଇଛନ୍ତି, right? See, କହିଛନ୍ତି Harsha was the lord of 5 Indies. Right? So ପାଞ୍ଚଟା ତମର ଯୋଉ like North India ହେଇଗଲା, East India, South India, ଏ ଲୋକ like he is a lord of 5 Indies. right? India को ପାଞ୍ଚଟା ଇଏରେ part is divide କରିକିରି he was a lord of 5 Indies ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, right? He has praised the administration of Harsha. ତାଙ୍କର administration काफी praise କରିଛନ୍ତି. He has called him lord of 5 Indies, right? Almost like complete India ras rule କରୁଥିଲେ, right? Though it was mostly
what do you call, North India only, right? But this guy has praised him a lot, right? This is a lot of 5 Indies. He has praised Harshavardhan's administration, right? He has described Harshavardhan as a laborious ruler. काफी परिश्रम करते, laborious ruler तांको कहते, right? तांकर welfare oriented ruler तांको कहते. से कहते तुम्हारा हर्षा का जो इनकम टाको Harsha divided करते into 4 parts. One was for the administration, one was for the distribution among the government officials, one was for the scholars, right? And the last part was for charity, right? So detailed account देथिले तांकर income टा केंति तमर 4टा way रे divide हो 4टा part रे, right? The administration governance भलो अछि, governance and administration strong अछि. There was no revolt during his time. Then taxation liberal thila, right? तमर like judicial system liberal thila, taxation liberal thila, बेसी burden पकोनो थिले लोकों ऊपर, right? He has talked about the army of Harsha. Harshavardhan time discuss kalam dekhiba detail, like he's given a very like lofty description कि तांकर बहुत बड़ा infantry थिला, बहुत सारा elephants थिला, बहुत बड़ा cavalry थिला, right? काफी detailed like एवढा बड़े छोटे से कहछंती, right? That was bit surprising काहेकि can anyone tell me काहे surprising? Like से कहछंती कि army एते बड़ा थिला तांकर काहे हम surprise होछु, काहे नथिबो तांकर army? Any idea why? तांका आर्मी काहे की एते बड़ माने लाइक डिस्क्रिप्शन तो काहे की हमें एते कंप्लीटली माने हमें ताको एसिमुलेट कर परने कोन पे असुविधा हो काहे आर्मी ताकर कोन प्रॉब्लम? Because he was confined to the North India only. नॉर्थ इंडिया वाले से आर्मी बड़ा बने माने नहीं. Anything, there is some other reason. There is a reason more on the political aspect. सर तांका इनकम टा 4टा पार्ट रे डिवाइड हो जाउची, मे भी सेथि पय से आर्मी रे बेसी इन्वेस्ट करि परिबेनी. सीमित नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पे पार्ट अछि. सर से पुलकेशवर द्वितीय ठरो हारिथिले बोली. पुलकेशन एजेंट हारथिले जे अगेन ए आर क्वेश्चन आंसर जहा ता पे हारथिले. अब डू यू नो अबाउट योर feudalism? Do you know about feudalism? Yes sir. Yes sir. Harshavardhan का age was the age of feudalism. It was the age of feudalism, right? Feudalism माने कौन जानते हो? Feudalism माने any idea what is feudalism? Just a brief idea. सामंत प्रथा. सामंत system, very good, right? कौन feudalism टा कौन? ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ Okay, something close. Okay, तो तम सेंटर अछि. Mauryan society रे कौन थिला जोड़ा तम किंग तारो, though there was some decentralization, there was a nucleus, there was a core, right? तमर core थिबो, then there will be nucleus, right? Then there will be periphery, तीनटा रीजन थिबो, right? तो but still center रो बहुत कंट्रोल थिबो, तारो अलगा जहां भी अलगा डिवीजन अछि, प्रोविंशियल सब प्रोविंशियल सेटअप अछि, राइट? ता ऊपर ना सेंटर रो काफी कंट्रोल थिबो. There will be a strong king, he will be having a strong army, right? The king will be a strong king, he will be having a strong army, तार इकोनॉमी स्ट्रांग थिबो, राइट? ट्रेजरी रे पैसा दिले ना से आर्मी मेंटेन करिवो, तो ट्रेजरी स्ट्रांग थिबो, तार आर्मी स्ट्रांग थिबो, सी आंको पे शासन चलेबो, लाइक ऑल स्टेट्स नो कंट्रोल रखियो. दिस इज ए लाइक unitary system, strong, what do you call centripetal polity. अगर centripetal polity भी को जो strong center था पूरा.
फ्यूडलिज्म में कौन असुविधा हुए ना, रिवर्स हो जाए। दिस এই जो states ଅଛନ୍ତି entities ଅଛନ୍ତି they become powerful right। so probably କାହିଁକି ତମର economy weak ହେଇଯାଏ ତମ center ର, economy weak ହେଲେ ତାପରେ ବେଶୀ army ବି ବେଶୀ ନଥାଏ right। ତ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଟା ଇକୋନୋମିକ ଆଙ୍ଗେଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଲେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ରାଇଟ୍। କାହିଁ ଜଣେ ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁଲର ଥିବ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମି କମିଯିବ, ଡାଉନଫଲ ହେଇଯିବ, ଇକୋନୋମି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁଲର ନଥିବ, ସିଏ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସନ କରିପାରିବନି। ତ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରର ତମର ଇକୋନୋମି ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ମି ନଥାଏ ରାଇଟ୍, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ଆଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ ବଡ ହେଇଯିବେ, they will be playing a bigger role right। though now they are accepting the suzerainty of the center right, ମାନେ ହର୍ଷାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, but still ହର୍ଷା ପାଖେ ବଡ ଆର୍ମି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆର୍ମିଜ ଅଛି, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ହର୍ଷାକୁ ଆର୍ମି ଦେବେ ରାଇଟ୍। ହର୍ଷାଙ୍କର ନିଜର ବହୁତ ବଡ ଆର୍ମି ନାହିଁ, ହର୍ଷାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆର୍ମି ଅଛି, but it is small army। ଯୋଉ ମେଜର ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି war ରେ, these are these feudal lords, they help them during the war। এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଜେନେରାଲି ଟିକେ ତମର ଯୋଉ ତମର କହୁଛ ପୁଲକେସିନ ଠୁ ହାରିଗଲା, ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ ଜିତିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରାଇଟ୍। କାହିଁକି ତମେ ତ ଅଲଗା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ତମ ଯଦି ଆର୍ମିଜ ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି, ତମ କମାଣ୍ଡର ସେମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସ କମାଣ୍ଡର କାମ କରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ନଥିବ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ରାଇଟ୍, କଥା ମାନୁନଥିବେ, ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆର୍ମି ଇଜ ଅଲୱେଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଇନ୍ ଏ ୱାର right। if you have your own army it's always a better situation to be in right। mostly এটা তোমার जो Mauryan administration থিলা, Mauryan age was a central polity, completely central right। then during your Gupta period, the Gupta age থিলা, it was a proto feudal, we say proto feudal, ধীরে ধীরে feudal system ଆସିଗଲାଣି right। ତମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଧୀରେ 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 ତମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଗଲେ ରାଇଟ୍, ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଜ ଅଫ ଦ ହୁନ୍ସ ଇନଭେଜନ ଯୋଗୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ମନିଟରୀ ବି ତମର ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଗଲାଣି। ତମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତମର ରୋମାନ ଟ୍ରେଡ ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଯିବ ରାଇଟ୍, around your 450 AD ରୋମାନ ଟ୍ରେଡ ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଯିବ, ଆଉ ଇକୋନୋମି ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବନି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର even though the states provinces they will become stronger, these governors they will become stronger right। तो ସେମାନେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର କଥା ମାନିବେନି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଲୁଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଗୁପ୍ତା ଏଜ କୁ ପ୍ରୋଟୋ ଫ୍ୟୁଡାଲ କୁ ସ୍ଲୋଲି ତମର ଫ୍ୟୁଡାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ କୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଡାଲ କୁ ରାଇଟ୍, this is the age of feudalism and after ହର୍ଷ ତ ଆଉ କିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ରହିବନି ହିଁ ଜମାରୁ। ହର୍ଷ ବେଳେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ this Harshavardhan he will be what do you call holding this together, ମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଥିବ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସାରେ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ till the arrival of Turks 12th century ତକ, ମାନେ ଗୋଟେ around this complete period ଗୋଟେ 700 ରୁ 1200 500 ବର୍ଷ it will be completely disarray, there will be no single power, there will be lot of states and all right। so that is the age of feudalism, early medieval period of the early medieval age right। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିରିୟଡ ଟା ବି ଏଜ ଅଫ ଫ୍ୟୁଡଲିଜମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ମି ମେଣ୍ଟେନ, ବଡ ଆର୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ କାଭାଲରୀ ଅଛି, ବଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତମର 2 ଲକ୍ଷ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ କାଭାଲରୀ ଅଛନ୍ତି, 50 ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଟ୍ ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖୁଛୁ, ବିକଜ ନଟ୍ ପସିବଲ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସେଟଅପ ରେ ତମେ ଏତେ ବଡ ଆର୍ମି ପର୍ସନାଲ ଆର୍ମି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପସିବଲ ନୁହଁ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଥିଲି। Okay, Yes, sir. so this is about your jo political condition right। he has given a detailed account about Harsha's rule, his like tanga administration ko praise karchandi, tanga governance ko praise karchandi, tanga describe karchandi kimiti je income ko 4 भाग divide करथिले, गोटे administration में खर्च होतला, गोटे तंगर government officials मान को दिया जाउतला, गोटे scholars मान को दिया जाउतला, like welfare state थिला, काफी scholars मान को माने प्रमोट करथिले, गोटे चाइल्ड रे दिया जाउतला। रिवोल्ट किसी नथिला, जुडिशियल सिस्टम काफी लिबरल थिला, टैक्सेशन काफी लिबरल थिला, तंगर बहुत ह्यूज आर्मी थिला राइट। ऑल दिस थिंग्स, हर्षा लेबोरियस रूलर थिले राइट, ऑल दिस थिंग्स ही हैज मेंशन्ड राइट।
तो बहुत तारीफ करछन हर्षवर्धन को. Then coming to the religious life, right? Religious condition. तो एई टाइम रे like he has told कि brahmanism पुणी rise हेलानी, right? Saivism, Vaishnavism, right? तो brahmanism पुणी rise हेलानी. तो एई टाइम रे buddhism, jainism are still popular but brahmanism पुणी dominant हेलानी, right? So just if you see this time, by this time now तमरो buddhism पुणी decline करी हेलानी, right? Because you know Mahayana तमरो Mahayana थिला division ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା sects ଥିଲେ, right? I think he will tell there are 12 sects, right? He'll I think mention ବି କରିଛନ୍ତି କି 12ଟା sect ଥିଲେ ତମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜମ ର divide ହେଇଥିଲେ 12ଟା sect. ତ ବୁଦ୍ଧିଜମ ବହୁତ ସାରା sect ହେଇଛନ୍ତି, ମହାୟାନା, ହୀନୟାନା, right? ହୀନୟାନା ତ initially ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ pure buddhism ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ teaching ସେ believe କରୁଛନ୍ତି, right? ସେମାନେ believe କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଲି ଚଲାଅ, पाली language literature रहना दरकार, बुद्ध का original teachings follow करो. Then this guy Mahayana Buddhism से मैंने कौन पूछा नहीं संस्कृत आने दिया, gifts accept करो, luxurious life lead करो, right? तो जो evils of Brahmanism against समय stand करते ले, से इस evils ताकर भी आसिया लगने ताकर भीतर है. So slowly Buddhism has become your less popular. Plus this Hun's invasion, right? That Hun's tribe जो invasion करते ले तो हमारा like after during Gupta period start कर देते ले, after Gupta पूरा बहुत बेसी तोड़फोड़ करते ले, तो नहीं करते ले, तो ताको भीतर लाइक तोरमाण हे गले, मिहिर कुल हे गले, राइट? तो से माने काफी जो बुद्धिस्ट सब मोनास्ट्रीज को भांगा भांगी करी काफी बेसी आतंक मचाई थिले, राइट? तो बुद्धिज्म धीरे धीरे एरिया में डिक्लाइन करी लानी, तो दैट ही हैज मेंशन्ड. नहीं वर्तमान में विल नॉट डिस्कस मोर ऑन बुद्धिज्म. ओके, तो राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म तो से कहते, but then he is also telling कि तमरा Buddhism and even Buddhism and Jainism, right? Buddhism and Jainism are popular, like where they were popular, right? But Brahmanism slowly dominant हवा असलानी तारो popularity rise हेलानी. He is telling कि तमरा tolerance अच्छी people करो अपने peaceful coexistence अच्छी among religions, right? Peaceful coexistence among religions, different religions peacefully coexist करछंती. And he has talked about various religious assemblies, right? Like your Prayag assembly and Kannauj assembly. Right? So Kannauj assembly was for your Buddhism ऊपर assembly थिला, right? So Buddhism ऊपर detailed discussion वगैरह deliberations कर ले, right? Prayag assembly was for charity, right? महामोक्ष परिषद कहते महामोक्ष परिषद, right? 5 वर्ष थरे हुए महामोक्ष परिषद हमें हर्षवर्धन पढ़ला डिस्कस करिया जे जेतरे पूरा तांगर जते इनकम थाए पर्सनल इनकम लाइक कि सबरा दान कर दियंती, लाइक तांगर ज्वेलरी हे गला, तांगर पैसा हे गला, तांगर इवन कपड़ा तक सो दान कर दोथिले प्रयाग असेंबली रे, लाइक तो तांको बहुत बेसी मालिगिर करते सब किछि से सेठी दान कर दोथिले, लाइक इन दिस प्रयाग असेंबली, राइट? एंड कन्नौज असेंबली इज अबाउट बुद्धिज्म. तो एगुडा सब कोतले रिलीजियस असेंबली पर्सनली हर्षवर्धन आको ऑर्गेनाइज करथिले, लाइक पर्सनल इंटरेस्ट होते पर्सनल को ऑर्गेनाइज कर, राइट? अच्छा एई टाइम से कोतले संस्कृत रो राइज ऑफ संस्कृत,
संस्कृत टिके लोकल पाली प्रकृत एवढा सब टिके पॉपुलर हे जेतला बर्तमान पुणी राइज ऑफ संस्कृत हेलाणी काफी तमर एई टाइम रे से कहउचंदी तमर बुद्धिज्म को लिटरेचर हे गला इवन जैना किछ लिटरेचर हे गला दे स्टार्टेड कंपोजिंग इन संस्कृत तो कहउथिल ना तमर महायान बुद्धिज्म दे स्टार्टेड कंपोजिंग यूजिंग संस्कृत इन महायान बुद्धिज्म right they started using Sanskrit. So this is about the religious condition, right? He has described. So Brahmanism rise करिलानी ए टाइम रे Buddhism and Jainism still popular achanti, but Brahmanism has become dominant. तमर use of your Sanskrit popular हेलानी तमर this religious assemblies like Prayag assembly or Kannauj assembly, right? And he has talked about peaceful coexistence of all religions, right? This is about your religious life, right? Then coming to your social life. सी कहते तुम कास्ट सिस्टम काफी रिजिड होता ए टाइम रे he has talked about untouchability, right? Even Fine has talked about untouchability. So rigid caste system, he has talked about untouchability, right? He has told कि women मानो को education दिया जाता है, women got education. Then he has टिके contrary और तो कहते women मानकर education है आउट जा कहते सती बहुत dominant prevalent थिला सती was like बहुत बेसिकली prevalent है थिला, right? No, just take a part. I would like to say one point, right? Remember this, like I will be probably repeating this point throughout. Like जेतले मु society में discuss करीबी, I will repeat that point. तो मन रखियो ना जेतले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थिबो ଗୋଟେ strong ruler ଥିବ ଗୋଟେ central administration ଥିବ, right? ସେଇ ଟାଇମରେ ଇକୋନୋମି ବି strong ଥିବ, ଏବଂ society ବି ଭଲ ଥିବ comparatively, right? comparatively society ବି ଭଲ ଥିବ, right? ଏତେ ବେଶୀ rigid caste system ନଥିବ, ଟିକେ liberal administration ଥିବ, right? ମାନେ ବେଶୀ caste lines ରେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ social divisions ନଥିବ, untouchability वगैरह ଏତେ ଖରାପ ନଥିବ, ଥାଇପାରେ, but it will be comparatively to a what you call feudal system to ଭଲ ଥିବ always. ଗୋଟେ feudal system ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ତମର central authority ନଥିବ, feudal system ପଳେଇ ଆସିବ, automatically ଦେଖିବ ଆ reverse ରେ ତମ economy down ହେଇଯିବ, feudal system ରେ ଆସିଯିବ, they are both reciprocatory, right? economy down ହେଲେ feudal ଆସିଯିବ, feudal ହେଲେ ବି economy down ହେଇଯିବ, right? ମାନେ two way. तो economy भी down होगा तुम्हारा, society भी down trend पड़े ऐसी हो, society रे you will see your this caste system dominant है जीवो, untouchability पड़े ऐसी हो, women मनो condition खराब है जीवो, lower class मनो condition खराब है जीवो, always. So this is a bude thumb rule भावे आपको नहीं जाओ. Central administration, talk about Mauryan administration, talk about Gupta. जितना जितना तुम्हारा central strong आसीबो, you see this condition will be improving, right? जितना हमारा division आसीबो, you see the society will be deteriorating. Mauryan पर post Mauryan आसिला, post Mauryan society खराब है गला, society बहुत सारा caste ridden है गला, बहुत untouchability वगैरह पड़े आसिला, काहे की? Because central administration पड़ेला, somehow it is related. तो हमारा सिर्फ गुप्ता टाइम में देखिए तो कि improve ही थिला, society was little somehow better comparatively. गुप्ता पर देखिए पुन decline है गला, हर्षवर्धन टाइम decline है गला, हर्षवर्धन पर early medieval age रे it was the very bad situation, dark age तो कहूँ, right? आमे तो कोनु colonial history से कहूँ चंदी,
तो सेही टाइम इकोनॉमी पूरा बर्बाद थिला, सोसाइटी बहुत इविल्स थिला, पूरा full of your evils थिला, right? This is one thumb rule you can remember. Okay, the practice of sati was prevalent. ଲୋକମାନେ ସବୁ people, they were simple and honest. Most of the people they walked. Right? People they walk barefooted. They are simple and honest. They are like respectful towards each other. Right? ଭଲ like cordial relations ଥିଲା, respectful towards each other. These are some of the common points you can write everywhere, right? ସବୁ ତମେ foreign traveler ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ mention କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ ଦୁସରା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ cordial ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି cordial ଥିଲେ, like peacefully ରହୁଥିଲେ ସବୁ religion ମାନେ, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। He has told there are there are 9 methods of salutation, right? एक दूसरे greet କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତମ ନମସ୍ତେ, ରାମ ରାମ, right? ଗୋଡ ପାଦ ଛୁଞ୍ଚେ, ହାତ ହାତ ଯୋଡୁଛେ, right? Different religion different ହଉଥିବ, like ଯଦି like Muslim Islam ରେ like this ସେମାନେ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି, ତମର salam alaikum salam ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅଲଗା। there are 9 different methods of greeting, right? ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ observe କରିଥିଲେ, right? Then he has told ki the people, they are Indians, they are very fond of dresses, right? They are fond of dresses. So he has told ki different quality of dresses pinthile, different material, silk hegala, cotton hegala, different the fabric different rothula, different colors rothula, right? They are very fond of dresses, different material, different color, different fabric or different colors of dress pinthile, right? So this is whatever he said, this is what he said about the society, right? Caste system वगैरह ये कहते untouchability, caste system, sati system विषय कहते society deteriorate ही असले नहीं टाइम रे, right? And then he has talked कि लोगों माने they are simple, honest, respect करते एक दूसरे को, right? And they are fond of dresses, right? So this is about the society. You cannot create more frames, अच्छा in the restriction अच्छी। Okay, economic condition से कहते कि in general तमरो rich and prosperous अच्छी state is rich and prosperous, and he has mentioned about trade कि trade तमरो चलची, right? He has talked about तमरो busy ports, तमरो import items कौन थिला, export items कौन थिला, right? So this is bit surprising because एई टाइम रे तमरो trade commerce तमरो decline ही हेतला, trade commerce तमरो decline ही हेतला, तमरो agriculture prominent ही हेतला एई टाइम बडू, right? Trade commerce तमरो trade commerce industry decline ही हेतला। This is bit surprising, right? When he has talked about trade, he has talked about rich and prosperous state. State पे तो पैसा नथिला एई टाइम रे, एटा feudalism रे एज थिला, state पे पैसा नथिला, एई दीटा पॉइंट के controversial, right? And he has talked about कि old cities जो थिला, जो पुराना power centers थिला, the old cities were in ruins, right? Old cities were in ruins, right? तो old cities like तमरो पाटलिपुत्र हो गला, right? पाटलिपुत्र हो गला, तमरो कपिलवस्तु हो गला, right? All those old cities, the main their power centers होतुला like they have become weak, they're in ruins. New cities पळे आछथि वर्तमान, new cities have come to limelight, like there is Kannauj, Prayag,
राइट तो एटा तमरा इंपोर्टेंट हे गेलानी कन्नौज को काफी बेसी प्रशंसा करछंती राइट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करछंती प्रयाग को भी तमरा से इंपोर्टेंट कहछंती then he has talked about new universities right see he has talked about some in new cities re he has talked about your Nalanda right he has talked about Vallavi right এই यूनिवर्सिटीज को सब तमरा हर्षवर्धन पैटर्नेस दउतले पैसा दउतले এই टाउन गुडा को यूनिवर्सिटी जोगु it had become famous right prominent towns as it like so cities गुडा को नालंदा हेगला बल्लभी हेगला राइट ए दिटा तमरा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज रहउतला ए तो काफी आको डोनेशन मिलुतला स्टेट रू एंड दिस सिटी have become prosperous right so this is about your economic life right तो टिके कॉन्ट्राडिक्टिंग इनिशियल देइचंदी से कहइछन ट्रेड एंड कॉमर्स थिला कहउछन रिच एंड प्रॉस्परस थिला से कहउछन पुरना सिटीज गुडा रुइंस थिला नुवा सिटीज टाइम पड़े आस्थिला पुरना पावर सेंटर्स गॉन न्यू पावर सेंटर्स लाइक प्रयाग तमरो कन्नौज हे गला देन यूनिवर्सिटी टाउन्स लाइक योर नालंदा बल्लवी एटा सब पड़े आस्थिला राइट then he has talked about okay सरला क्लियर कर दो आइडा then he has talked about education system as well Kola. तो एजुकेशन सिस्टम रे सी कहतले दी प्रकार एजुकेशन थिला कोला ब्राह्मणिकल स्टाइल गोटे ब्राह्मणिकल वाला थिला गोटे बुद्धिस्ट वाला थिला बुद्धिस्ट गुडा को तमरा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज मोनास्ट्रीज रे होतला राइट बुद्धिस्ट गुडा मोनास्ट्रीज रे इंपार्ट करा जाउतला ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल थिला एटा तमरा मोस्टली एटा जो गुरुकुल रे दिया जाउतला एंड इट वाज योर mainly religious teachings दिया जाउतला ब्राह्मणिकल राइट दिस इज ऑब्जर्वेशन दीटा प्रकार होतला गोटे ब्राह्मणिकल गोटे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज दउतले यूनिवर्सिटीज गुडा दउतले and brahmanical it was like imparted in gurukuls and mostly it was religious education was imparted orally right orally impart kara jautila but writing eta me thila text writing pore asthila they used to write so education text sabu lekha hotula but education mostly it was imparted orally thik achi they promoted debates and discussions promoted तो सबू कथा रे लाइक इट वाज नॉट ए वन वे वाला एजुकेशन सिस्टम टू वे सबू जिनस रे डिबेट डेलिब्रेशन करी करी लाइक लर्निंग होतला राइट से कहतले मोस्टली एजुकेशन दिया जाउ रिसीव करथिले बिटवीन तमर एज ऑफ 9 to 30 though there were like some caste like some people that dedicated the complete life to education pura life jaga पाठ पढुथले but in general age bracket रे 9 to 30 years रे education से माने नउथिले right then Nalanda University detail देइछथि कि Nalanda University को हर्षवर्धन patronage so दोथिले and all right Nalanda University रे both तमरो theoretical पाठ पढा जाउतला then practical knowledge दिया जाउतला right both theory and practically पढा जाउतला that famous university thila and Nalanda University Buddhist university thila but their course was completely different depending on the different sects the different sects by different courses rotula right ए टाइम रे तमरा 12 टा different sects of Buddhism हे थila okay actually not 12 टा actually 18 टा न्यू सेक्ट्स हेतिला राइट 18 टा न्यू सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म मीडियम आसी हेतिला तो सब सेक्ट कर हिसाब रे टिके एजुकेशन टिके सब्जेक्ट्स वेरी करतला okay so this is about the education system right he has told there were two types of education thila gote brahmanical system education thila gote buddhist system thila buddhist guda tamra jo universities monasteries re impart kara hotla brahmanical gurukul re kara jautla religious education thila orally education impart kara jautla ei time text writing asi hitla right the education texts were written they promoted gote practical approach hotla gote debate deliberations kari ki patha paduthile right jiba
Then the education mostly they received in the age bracket of 9 to 30 years education receive करथुले, right? It was famous तमरा नालंदा university was very famous जोटी कि तमरा theory practical both रे तम पढ़ा होतुला. Different sects थिला तांकर different courses ताका हिसाब थिला. There were like 18 different sects of Buddhism and ताका हिसाब subject used to vary, right? So this is about your education system, right? Now coming to last part, critical analysis. I'm conclude करके we'll छाड़ critical analysis of your Huensang's account. ହେଲା प्रथम positives जो देखिवा detailed description देइचंती. Yes, this is a good thing. Detailed description देइचंती. Kintu he has discussed only the positive aspects of Harsas. He has not discussed about the negative, right? So तुम कोई ना हर्षा तुम्हारा हाई एज चंदी बोले कि पुल केसिन से तो only positive aspects of Harshavardhan, right? दोनों जहाँ भी दाम valuation थिला कौन पे क्वेश्चन जाना नहीं, but positive aspect discuss कर चंदी because this account was written much later when he went to China. तो ताका पे कितनी pressure न थिला, but maybe because he had some good terms with Harshavardhan or something. Against a negative criticize करना है, positive election, right? So he has written about the positive aspects of Harshavardhan, right? बहुत सारा exaggerate करचंती, lot of exaggerations. Like हर्षा का army को कोई चंदी से, तांका charity को कोई चंदी, right? Trade कोई चंदी से टाइम trade नथिला trade कोई चंदी, right? He defeated जो उड़े powerful military conqueror कोई चंदी समस्ती हरे चंदी हड़ा मिच्छा होता, सी तमरा पुलकेसिन 2 हारी थिले. Powerful military conqueror तम कोथि conqueror कोथले सेटा भी उड़े भूल, right? Like these are some of the examples. सी कहितले हर्षा तमर बहुत सारा स्तूपस बनाई चंती, किछि ने एविडेंस हम मिलनी स्तूप हम किछि देयर इज नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट? तो आर्मी बड़ कहितले चैरिटी ओवर एम्फसाइज कर दैथिले, राइट? इट वाज नॉट लाइक दैट. लाइक सी को 5 वर्ष थरे जो महामोक्ष परिषद होतला प्रयाग असेंबली रे सब किछि दान कर दोथले, जो वस्त्र सुधा दान कर दोथले, राइट? तो मिलिटरी एक्सैजरेट करछंती, एते बड़ तांगा इन्फेंट्री थिला, कैवलरी थिला, एलिफेंट्स थिला, ताको एक्सैजरेट कर दैछंती. सॉरी तांगा मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट भी तांगा विषय एक्सैजरेट कर दैछंती. हर्षा आई विल डिस्कस डिटेल जेतला हर्षा डिस्कस करबी. हर्षा किसी बड़ कर नथिले, तांकर बापा तांकर भाई को जे मारी थिला, बापा को तो मार नथिले, बापा हार्ट अटैक मर जाइथिले, तांकर भाई को जे मारथिला ताको से बदला नहीं पार नथिले, तांकर भिणी के मारथिला, भाई को मारथिला. शशांक शशांक को से एक्चुअली हरै पार नथिले. देयर इज नो मेंशन कि शशांक को हरै चंदी. ई कहते जेबे तक शशांक को न हरैछि मु सब क्राउन रे बसिबिनी, मु क्राउन से तक नेबिनी, राइट? तो ऐसे सब कसम फसम खाइते. एविडेंस जणा पछ हर्ष शशांक डाइड मच लेटर, से बंची थिला हर्षा करे ये तक. तो शशांक मुझे हरै नांती, जे आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है से पुलकेसिन 2 टू हाई थिले, राइट? तो मिलिटरी कॉन्क्रीटर ଗୋଟେ ବଡ एरिया ଗୋଟେ ଟିକେ एक्सैजरेशन. बहुत सारा स्तूप बिल्ड करछंती, किछि एविडेंस आर्कियोलॉजिकल मिल नहीं, राइट? सी बुद्धिज्म को फेवर करथिले, फेवर्ड बुद्धिज्म एटा ଗୋଟେ ये काफी बुद्धिज्म को फेवर करथिले. दो देयर आर लाइक एविडेंसेस ही हैज गिवन लैंड ग्रांट्स टू टेंपल्स एज वेल, scholars your brahminical scholars as well, but he favored Buddhism mostly. Okay, and what else? See कहते religious tolerance होचंती, religious tolerance सिंधे हमें जैनिज्म विषय हमें किसी मेजर देखुनो ए टाइम religious tolerance जो कहचंती टिकी ओवर एम्फसाइज कर दैचंती, बेसिक बुद्धिज्म को फेवर करथिले जे. So this is mostly exaggerations, examples of exaggerations in inciting, right? अच्छा, to conclude कौन कहि परिया, हमें conclude करे कौन कहि परिया, एडा लिखि देला, फोटो नै गेला. Conclude conclude हमें कहि परिवा सेम पॉइंट, राइट? कि आमो केटा ओडे
alternate what do you call it, alternate lens दोचंती compared to indigenous sources, right? The alternate lens हम provide करछि to analyze, to see the society ଗୋଟେ on ground reality सेटा में कौन थिला, right? तो सेटा ଗୋଟେ alternate lens to indigenous sources, right? Alternate lens to indigenous sources हमें on ground reality कौन चल society से जानिया मिलछि हमको, right? लोकंगर लाइफ विषय जानिया सोसाइटी जानिया मिलछि जोटा अलगा इंडिजिनस सोर्सेस मिल नथिला, एंड काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलुछि हमको अबाउट द सोसाइटी, द पॉलिटी, द इकोनॉमी, एवरीथिंग, राइट? सो only thing is that it has to be studied in collaboration with other sources, right? जोटा हम सब केस लिखुछु, so other sources सहित हम कोलैबोरेट करिके अपन एनालिसिस करिवा, we will get some extra information जोटा हमको काफी हेल्पफुल रहउछि, राइट? तो कंप्लीटली हम नबा नहीं, हम अलग सोर्स को एनालिसिस करिवा, ता हिसाब रे व्हाटएवर वी कैन टेक विल टेक इट, राइट? सिर्फ कोस न बड़ा आर्मी, राइट? आई एम नॉट टेलिंग इट्स बड़ा आर्मी, हम उस कोइ दोस डायरेक्ट की भूल कहउछन, काहे कहउछि काहे अलग सोर्स जणा पड़छि नथिला, right? So when we study this with collaboration with other sources, we will आमे justice कर, आमे ठीक information जहाँ पाया गया था पाई जाएगा. Okay, so this is the conclusion. Any doubt in this? तो हम क्लास एंड कर दवा, हमें एंड कर दवा, रिकॉर्डिंग अपलोड हे जीवो आज, तो देखि दवा.